All right. So let's get started. Uh, so you don't have to take any notes while we are going through these examples because all of these are available on my blog. So whenever you want to take a look at them, you can always do that any time of the day. It's like I'm available with you all the time, right? So let's go through them one by one. They start from really easy ones to really tough ones. So make sure I have your best attention here. So finding the largest number in an array. Um, and I think most of you will find this to be quite easy. So as you can see, there is an array here, right? And you are asked to find the largest one out of that. So if you were to do this on pen and paper, how would you do that? Like, you know, you'd start looking at the array from the left and keep going to the right, and you will keep track of the largest element that you have seen up until now, right? So, for example, for all we know, 3 might be the largest element, right? And any element going forward to the right is probably going to be smaller than 3. So let's assume that 3 is the biggest element, and then take a look at 5. Now 5 looks like is bigger than 3. So 5 is like the current cup holder. Right? And then we move on to 9. 9 is now bigger than the current cup holder, which is 5. Then 9 is the current cup holder, right? That's the maximum so far. There might be elements to the right which are bigger than 9, but they maybe not. So let's just give the cup for now to 9 and take a look at 1. 1 is not bigger than 9, and 6 is also not bigger than 9. So you would say that 9 is the largest number, right? So all you do is set the maximum to the first element in the array, then start from the second element of array up until the end of the array. Then you keep comparing each element that you encounter in the loop with the current max. And if that particular element is bigger than the max that you have up until now, you set that element as the max, right? And you keep moving. That way you will find the maximum number in the array. All right. So let's move on to the next easy problem. Check if an array contains a specific value. So you give this function a value that you're looking for, and you have the array and its size. So this is basically linear search. And we have taken a look at that before. All you do is start from the first index, go up until the end of the array, and you check each element you encounter in the loop to see if that is equal to the value. And if it is, then you return a true. If you go through the loop and till the end, you are not able to return, that means that element is not there in the array, and you return a false. That's all. Sum all the numbers in an array. Again, a simple one. So you take an array and its size, right? And you set the sum or the total variable to 0. And you have to do that because if a variable is not initialized to a particular value of your choice, for the case of sum, you take it as 0. If you were to find a product like a factorial, you set it to 1, because if you set it to 0, then you multiply anything with that, everything stays at 0. So you set the sum here to 0, and then you start from the first element of the array, go up until the end of the array, and every element you encounter, you keep a running sum, and that's all. And you return the sum at the end, right? All right. So this is where things start getting a little interesting. So you reverse an array in place. Now, if it was not in place, what would you do? If I ask you to just reverse an array using a temporary array, what would you do? Can I have someone comment on that? If you were to reverse an array by using a temporary array, how would you do that? So we will read the array from backward. Correct. So we will start a loop from size minus 1, and we go until we are greater than equal to 0. And then we will just read off the elements, put them in a different array, starting from the beginning, right?
So in the temporary array, correct, exactly. So we can do something like that. But if we were to reverse the array in place, like you're not allowed to use a temporary array, what do you do? So looks like the blog here has not updated. I'll have to. All right. So yeah, so now it's gotten updated here. So let's take this example. Let's just say we have this array 1, 2, 3, 4, 5, and you want to reverse this. So what you do is you keep 2 pointers, one at the beginning and one at the end. Then you swap them. So 1 goes where 5 was and 5 goes where 1 was. Right? Then you take the left pointer, move it 1 step to the right, and the right pointer moves 1 step to the left. Right? This is called as the 2-pointer technique. And we will be using this and many other problems here. So whenever they ask you a question, try to think if you can use the 2-pointer technique to solve it. I mean, not all problems can be solved like this, but many problems can also be solved like this. And you will develop an intuition when and where to use the 2-pointer technique, right? And now we swap 2 and 4. So 4 goes to where 2 was and 2 goes to where 4 was. And then you meet in the middle. 3 doesn't have to be shifted anywhere. And you can see the entire array got reversed. If you take a look at the code here, what do? We go from the start of the array till the mid of the array. There is no need to go beyond that, right? And we use a temporary variable to keep the left element, right? Then we set the left element to the right pointer element, right? Which goes like size minus I minus 1, right? Because take a look at this, size minus I minus 1. Why do you do that? Because when I equal to 0, the right element is at size minus 1, which is when I equal to 0, it will be size minus 1. And when I increases from the left, the right pointer should also decrease from the right. And that is exactly what is happening because here we have done a minus I. Right? So the left element is set to the right element and the right element is then set to the temporary variable which you have copied for the left element. Right? And if you keep doing this, the entire array will get reversed. Right. Count even and odd numbers. I'm not going to go into a lot of details here except for the fact that we have taken 2 pointers, one for even count, one for odd count, because you are going to return 2 things from the function. And if you want to return more than one thing from a function, you either return a structure or a pointer to a structure, or you take multiple pointers and you modify those values inside the function. And the caller will then check the new values after calling the function, right? You set the counts to 0 and you run a loop from the first element all the way until the last element. And if it's a multiple of 2, you increment the even count. It's like value of this pointer, wherever this pointer is pointing to, let's go there and do a plus plus on that. So whatever is the old value that gets incremented. Otherwise, if it's not a multiple of 2, if it's an odd number, then we increment the odd count and we print the results here. All right. Now, another challenging one, remove duplicates from a sorted array. So we have a sorted array and we want to remove all the duplicates. Now, let's take a look at an example here. So here is an sorted array. As you can see, it's clearly sorted, but there are duplicates. So the 2 1s here, 2 2 2 2, 2 here, and then there are 2 4s here and 2 5s here. So how do we remove all of these duplicates? So you set a pointer. This is again a 2-pointer technique where you keep a pointer on the left and you keep probing, right? And you keep probing to the right and you keep comparing to the left pointer here. Like if it's the same value, keep moving the probe pointer to the right. But if you encounter a different value, then copy that value, do a J++, move the left pointer 1 to the right, copy the value, then again continue and again keep checking. Like for example, what is happening here? You set ARR J to 1, right? Set J to 0, the left pointer is at 0, and you keep 1 there. And you start I from 1, right? Because this first element is already there. It can't be a duplicate of itself, right? That is already there. You start from 1, and you compare it with whatever is there at location J. They are both the same, nothing to be done. Move I to the next location. And here it looks like this element is different from the one here, which J is pointing to. What do? You increment J, make it point to this location and set it to the value 2, right? So now you have 1
and 2 here. Then you keep moving I will point to this 2, and that is the same as 2, right? So no change. Then when you reach 3, then you see that 3 is not equal to 2. Then you move j to this location here, set it to 3. So now you have 1, 2, 3 here, right? Is this clear to everybody what we are doing here? Little bit. Maybe what I can do is I can just go to. I hope you're able to see some kind of a notepad here, right? No? Yes. Okay, all right. I forgot which problem we were solving. We remove duplicates. All right. So let's start with the 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Right? So this is sorted. So what we will do is J will point here. Okay. And I will point here. All right. So this is the state of the array. Now, this 1 is equal to 1. So what you do is you move I here. Okay. You move I here. Now you compare this 1 and the 2 here. They are different. So that's a different element. It's not the duplicate of what J is pointing to. So what you do is move J1 to the right. Okay. Keep I pointing to 2. Change this 1 to 2 here. Okay. Then what do? You move I to the right and you compare to what J is pointing to. 2 is equal to 2, right? So nothing to do here. Then you move I to the next location, and that is not equal to 2. So what you do is you move J one location to the right. Okay. Keep I pointing to the same location. Okay. And you change this to 3. Okay. Then you move I to the next location here. Now 4 is not equal to 3. So J will go to the next location and you will set it to 4. Is this making more sense now? Yes, sir. Okay, cool. Rotate array to the right. Now, what do you think about rotation? Can anyone tell me? What do you think? What comes to your mind when you think about rotation? So shifting elements to the right. Okay, shifting elements to the right. So what happens to the elements that fall off the edge? Do you ignore them or do you then bring them onto the left side? It goes to the, if say we have to rotate by one places, then the last element becomes the first element, I guess. Correct, exactly. So if you want to rotate something by 2 places, so what happens to the last 2 elements? So they go from the end and they come on the left side, right? So if I were to give you one example here, let me again go back to our paste bin. Online notepad. So give me some numbers like 3, 5, 7, 8, 9. And if we were to rotate this 2 times, what would happen? So 3 goes to 7, 9 goes to 5, 8 goes to 3. Exactly. To 9. So these 8 and 9 will kind of come here, right? So now this will be 8, 9, 3, 5, 7. This is rotation by 2 times. So what is happening here? Is it safe to say that if I take this array and reverse this, what will I get? 9, 8, 7, 3, 5. Do you see a pattern between these two? So I took the original. So shouldn't it be 5 and 3? If we reverse the array. 7, 5, 3. Correct.
7, 5, 3. What pattern do you see? It's like So the first half is reversed and the second half is reversed, and then the whole array is reversed. Correct. So you reverse the entire array, right? So what do you do? Now you reverse these two, you get 8, 9. You reverse these 3, you get 3, 5, 7. That is the result. And how do you know only to reverse these two? Because that is the number of places by which you have to shift. So you take the original array, reverse it entirely, okay? Then whatever is the value of k, what is like 2 times you have to shift, and take the first 2 numbers, reverse them. Then you take the rest of the numbers, reverse them, and you will get your result. Is this clear to everybody? So if it is 5 elements, then we reverse the first 2 numbers. If it is 7 elements or 6 elements, then If it is 7 elements, as in what is? we are reversing the first 2 elements when we have 5 elements in the array. If there are 7, then then the middle element changes, right? So middle element will be at a different index than it is here. Here it is at 2. Give me an example. So say we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right. So here the middle element is 4. No, hold on. Shifted by how many times? So like the previous example, 2 times. 2 times. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right. So sir, here, so like in the previous example, we had 5 elements, so we shifted the first 2. So after reversal, we shifted the first 2 elements, interchanged their places, 8 and 9. So what is the problem? So here, hold on. So here we reverse the entire array first. All right. Yes. Is it clear? Then I reverse these 2. Yes, sir. Then I reverse these 2 to make it 6, 7. Yes. Then I just consider this part and reverse it. I get 1, 2, 3, 4, 5. Right? So that means whichever number of elements we have, we reverse the first 2, and then the rest of the elements which we are left with, reverse them separately. No. Here k is 2. No. So when k is 2, that's why I'm taking the. Yes. Think of what. So I'm always taking the example of k equal to 2 in all of these examples. Okay, if k equal to 2. All right. That's good. So you reverse this entire thing once. Okay. Yes. Then you take the first 2 elements. Why 2? Because k equal to 2 and reverse them. Okay. What do you get? So we are reversing the first 2 elements since we have k equal to 2 here. Exactly. Because k equal to 2, that's why you're reversing the first 2 elements and you get 6, 7. Then the rest of the elements are getting reversed and you get 1, 2, 3, 4, 5. This entire thing, if you see, this is this array rotated 2 times. Okay, sir. Okay. This makes sense to everybody? Yes. Okay. Yeah. Take a look at this. This is the code here. So this is the reverse function, which we already discussed a few examples earlier. And what rotate right does is takes the size of the array and the value k. Okay. And here we reverse the entire array because we go from 0 to size minus 1. Here we reverse the first k elements. So we go from 0 to k minus 1. And here we reverse the elements starting from k to size minus 1. Right? Exactly what I did on the notepad. And here you will get the reverse. Okay. I hope that made sense. All right. There's an explanation with example. It was right here. I did not have to go to the online notepad. But sure, just take a look at this during your free time and you'll be able to understand what is going on even better. Find all pairs in array with a given sum. Okay. What is this trying to tell you? Can someone tell me? Have you gone through this? Find all pairs in array with a given sum. It's a very common interview question actually. What would you do here? So let's just say given a lot of elements, you're going to find pairs whose sum is the specific number given. So let's take an example here. Now this is an array given. Okay. Now, and you are to find pairs with sum equal to 10. What would you do?
So we check each element along with the rest of the elements in the array, and you give the sum is 10 or not. If it is, then we print them. All right. So what do you think is the time complexity of that algorithm? So n squared. N squared, right? Is that the best you can do? At least that is the first thing which came into the mind right now. Bilkul. That is completely correct. And better do that than doing nothing at the interview, right? Just do that. So what Aditya is trying to say is that you take this one element. So what he's trying to say is something like this. Take this one element 1, okay? And you compare with 5. Is 5 plus 1 10? No. Is 1 plus 3 10? No. So when you reach 9, it will become 10. So you say, okay, 1 and 9 is the pair whose sum is 10, right? Then you take a look at 5. 5 has already been summed with 1. So you take 5 plus 3 and you just check. I think there will be no other thing here which will sum to 10. And you take a look at 3. 3 has already been compared with 1 and 5. So this is slightly better than that, right? What Aditya is trying to say. Just like bubbles of, like when you reach an element, there is no need to check the ones on the left of it because that comparison has already been done. Is it making sense? Yes. Okay. So then you take 3, compare with 7. Yes, that sum is coming out to be 10. Right? Just do this. But the complexity of this is n squared, which is probably not the best. Right? So what you can do is this again a 2-pointer technique. Just make sure you really understand this technique well. Take the array, sort the array. Right? If you use something like quick sort, what is the time complexity of that? It is n log n. Just remember that for now. When we take a look at quick sort, it will become clearer why it is n log n. Or if you do merge sort, it is still going to be n log n. N log n is much better than n squared. I think that fact has been put across quite nicely to you at this point of time. Now, what can we do? We can keep 2 pointers, okay? One pointer pointing at 1, the other pointer pointing at 9, okay? You sum them. Is the value coming out to be 10? 1 plus 9? Yes. Yes. If it is equal to that sum, then you take the left pointer, move it to the right, make it point to 2, okay? Now, this is how it is looking initially, right? The sum is 10. So now you move the left pointer to the right and the right pointer to the left. Again, sum them. Is it 10? 8 plus 2? Yeah. Then you move the left to the right, right to the left. Bring them closer. It will not always be the fact that the sum of the left pointer to whatever left is pointing to and to whatever right is pointing to, that is going to be 10. What do you do? If the sum comes out to be 11, which one will you move? So the left pointer. The left pointer. Why? The right pointer. The right pointer to the Right left. pointer. The right will move because the sum is coming out to be higher than 10, right? So we have to come up with a number so that, it is smaller than 11. So if you move the left pointer to the right, the sum will become even more than 11. Or at least it will not become less than 11. Right? But if you move the right pointer to the left, that means you're coming towards smaller values. That will bring the sum from 11 to below 11. Potentially towards 10. Is this clear? Yes. Okay. So, ऐसे करते करते, you can probe and find all the pairs. Okay. Keep in mind this 2-pointer technique is very common in interviews. Okay. And nobody will tell you this, right? Because it's all random. If you go to Geeks for Geeks or Lead Code, these questions are very random. So it is very important to curate the list so that students are able to understand, okay, these are the techniques. If I apply most of the time, then I'll get to where I want to. Right? That is what we are trying to do here. All right. Anyway, let's move ahead. I hope, nobody is getting left behind here. Just want to make sure if someone is not able to understand, there are 2 things that you can do. At least 2 things. Either you can ask me here, or you can go ahead and read the blog, okay? Or you can go ahead, watch the recording on YouTube of this lecture. Whatever you do out of these 3, and if you think I'm not clear enough, go look it up on the internet, read from some other source if you want to. But make sure that you understand what is going on, okay? Otherwise, you will be left behind, and that is not a very good situation to be in, okay? Don't be in that situation.
spend whatever time is there tomorrow, or if you want me to skip a class tomorrow, let me know. Take your time, do arrays really, really well. Arrays are very important. If you do arrays really well, the rest of the things will feel very easy to you. Okay, let's move on. We're already running a little bit behind. So merge two sorted arrays. Now you're given two sorted arrays. The arrays are sorted. Okay. So the first array here, its size, second array, its size, and the third array where you put the result after merging, right? Make sure that this array is at least of size what? Size 1 plus size 2. Otherwise, there is going to be a problem. Make sure you have enough space in array 3 here. So what is the idea? Take a look at the examples here. Now, I've given you two arrays. This is a sorted array. This is another sorted array. So what do you do? When you merge them, you have to make sure that whatever is the resultant array, even that array is going to be sorted into a single sorted array. You just can't merge them randomly. So what comes to your mind? You will keep two pointers. One pointer pointing to 1 and the other pointer pointing to 2 here. You will compare the two values. Is 1 bigger or 2 bigger? Looks like 2 is bigger than 1. So what will happen? In the resultant array, you will put 1. Okay? 1 को उधर डालो क्योंकि उसको भी sorted रखना है. ठीक है? तो ये वाला जो pointer 1 को point कर रहा था, वो भी 3 को point करेगा. वो आगे निकल जाएगा. Okay? It will move 1 position to the right. But this pointer here will keep pointing to 2 क्योंकि वो भी copy हुआ नहीं है. Resultant. ठीक है? अभी हम क्या करेंगे? ये 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे. अब इनमें से छोटा कौन है? 2. तो अभी 2 को कॉपी किया जाएगा 1 के बाद. कौन से अरे में? अरे 3 में, जो रिजल्ट में, जहां पे कि 1 को कॉपी किया गया था, अभी उसमें 2 को डालेंगे. डालने के बाद फिर ये वाला जो पॉइंटर था, इसको भी 4 को लेके आएंगे. अभी यहां पे ये पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है, यहां पे ये 4 को पॉइंट कर रहा है. इन दोनों को कंपेयर करो. 3 छोटा है, 3 smaller. Then you copy 3 to the resultant array. That has 1, 2, 3 now. You keep doing this until you reach the end of one array. इसमें end किसमें ज्यादा पहले आएगा? ये वाले में 7 आ जाएगा. उसके बाद जो बाकी बच गया है इस array में, उसको पूरा का पूरा कॉपी करो. क्योंकि एक array खत्म हो गया ना, बाकी array का जो भी बच गया पीछे से. मान लो ये array 2 में ये बहुत बड़ा array था, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 बहुत सारे नंबर्स होते, लेकिन array 1 तो खत्म हो गया ना. उसके बाद array 2 के जो भी बच गए पीछे से, उसको पूरा कॉपी करके डाल. ये थोड़ा थोड़ा सेंस बना माइंड में? हेलो सर, साइमल्टेनियसली दोनों अरे के एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं. हाँ, साइमल्टेनियसली दोनों अरे के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. सर तो ये क्या सर, मतलब क्या रैंडमली कि पहले इसके इतने एलिमेंट चेक कर लिए, फिर इसके एलिमेंट चेक कर लिए, एक एक करके देखो, तुमने ऐसे ऐसे करके 2 पॉइंटर को लगाया. ये पहले अरे को क्या है, ये दूसरे अरे को क्या है. इन दोनों को कंपेयर करोगे. ठीक है? मान लो ये वाला छोटा है, तो इस वाले को कॉपी करके रिजल्ट में लेके जाओ, फिर इसको आगे करो. ये उधर ही पड़ा रहेगा. समझ रहे हो? यस. ठीक है? फिर इन दोनों को कॉपी करो. इनमें से छोटा कौन है? अगर ये फिर से छोटा निकला तो इसको आगे करो, कॉपी करो और आगे करो. इन दोनों को कॉपी करो. मान लो ये छोटा निकला तो इसको कॉपी करो, फिर इसको आगे करो. ऐसे करते करते वो जाएंगे. जो छोटा होगा वो कॉपी होगा, वो आगे बढ़ेगा. ठीक है? अगर मान लो एक पॉइंटर एक अरे के एंड तक पहुंच गया, ठीक है, तो उसका काम हो गया. तो ये पॉइंटर से लेके ये अरे के एंड तक जो भी है उसको सीधा उठा के एंड में डाल देना है. ठीक है? समझे क्या? यस सर. ठीक है? तो यहां पे हमने क्या किया है, ये आई को 0 लिया है, जे को 0 लिया है, के को 0 लिया है. ये 3 अरे है हमारे पास, अरे 1, अरे 2. ये दोनों सोर्स अरेज है. ये कौन सा है? ये डेस्टिनेशन अरे है. ठीक है? तो हमने क्या किया, जब तक कि आई साइज 1 से छोटा है, मतलब वो अपने अरे के बाउंड्स के अंदर है, और जब तक कि जे साइज 2 से छोटा है, मतलब जे अपने अरे के लिमिट के अंदर है, ये दोनों अपने लिमिट के अंदर रहेंगे जब तक ये है. अगर अरे ऑफ आई अरे ऑफ जे से अरे ऑफ 1 आई, मतलब पहला पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है अरे 1 को, अगर वो वाला वैल्यू
अरे 2 के जे से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अरे 3 में क्या डालेंगे, अरे 1 का वो वाला वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे, के को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि के किसको पॉइंट कर रहा है, रिजल्ट जहां पे स्टोर कर रहा है, हमने वहां पे एक वैल्यू स्टोर कर दिया तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो ओवरराइट होता रहेगा उसके। और यहाँ पे आई को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब, पहले के का वैल्यू और आई का वैल्यू यूज किया जाएगा, ये पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद उनको बढ़ाया जाएगा आगे, है कि नहीं? हेलो, ओके, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हम ये के अरे 3 में क्या डालेंगे, अरे 2 से उठा के डाल देंगे और उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। समझ रहे हो? ठीक। लेकिन अच्छा, ये वाइल लूप फिर कब खत्म होगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब आई अगर एंड तक पहुंच गया या जे अगर उसके एंड तक पहुंच गया। अगर पहुंच गया तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन पहले पहुंचा था। ठीक है, अगर आई अभी भी उसके बाउंड के अंदर है, मतलब उसके बाकी एलिमेंट्स को जाके अरे 3 में रख दो, और अगर जे अभी भी बाउंड्स के अंदर है तो उसके एलिमेंट्स को लेके तुम अरे 3 में रखो, तो ये करने से मर्ज हो जाएगा, है कि नहीं? समझे या फिर से समझा दो? समझ गया। समझ गए? बाकी के लोग भी समझ गए? ठीक है, यहां पे एग्जांपल देख लो। इनिशियल सेटअप में क्या है, अरे 1 है, अरे 2 है, अरे 3 जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए। ठीक है, 1 2 से छोटा है तो 1 को हमने अरे 3 में रख दिया, अभी अरे 3 में एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अरे 1 से 3 और अरे 2 में से 2 को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? ये वाला और ये वाला कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 2 छोटा है तो 2 को स्टोर करेंगे और अगले बार हम 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। ऐसे करते करते देखो तुम्हारा अरे 3 में सॉर्टेड अरे आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द kth max and min element of an array. So you're given an array and you have to find, like, let's just say the third biggest element and the third smallest element. Now, I asked some people to solve, like all of you to solve. Some people solved it using sorting. So you sorted the entire array, okay? Let's just say in the ascending order. So how do you look at the third biggest? पीछे से थर्ड वाले को देख लो और आगे से थर्ड को देख लो, तुमको मिनिमम और मैक्स मिल जाएंगे, है कि नहीं? हो सकता है वैसे? है ना? मेरी आवाज आ रही है, कट गया? आ रही सर। आ रही है, ओके। तो अगर तुम अरे को सॉर्ट कर दो और हमको सबसे मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को दे देंगे। सबसे मैक्स एलिमेंट चाहिए, आखिरी वाले एलिमेंट को दे देंगे। अगर सेकंड मिनिमम चाहिए तो हम दूसरे एलिमेंट को देंगे, और सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो लास्ट को छोड़ के उसके पहले वाले एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। ऐसे करके तो उसको तुम सॉल्व कर दोगे। लेकिन दूसरा क्या तरीका है कि हम हीप यूज कर सकते हैं। अभी हीप यूज करके कैसे सॉल्व करना अभी मैं नहीं समझाऊंगा, जब हीप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको यूज करके करोगे तो ये और भी एफिशिएंट है। और हीप्स को इस कारण के लिए यूज किया जाता है, जो इंटरव्यूअर है वो ये एक्सपेक्ट करेगा तुम इसको हीप यूज करके सॉल्व करो। लेकिन इस ब्लॉक में और इस क्लास में मैं तुमको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, काफी लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे हो सकते हैं समझाने में। इसीलिए हम इसको अभी स्किप करते हैं, जब हीप आएगा तब इसको फिर से रिटर्न करेंगे। चलो ये वाला अभी देख लेते हैं। मूव ऑल जीरोस टू द एंड। So you have an array in which there is a smattering of zeros here and there. Randomly बीच बीच में कहीं पे जीरो घुसा के रखा हुआ है। हमको क्या करना है, सारे जीरोस को बबल अप करके फिल्टर करके एक बाजू करना है। ठीक है, कैसे करना है? ये देख लो, यहाँ पे एक array है, ठीक है, और यहाँ पे बीच बीच में जीरो घुसा हुआ है। क्या करोगे, तो यहाँ पे हमको एक इटरेशन करना है, ठीक है, और ए वेरिएबल
इंडेक्स इज इनिशियलाइज टू 0, तो पहले वाले वैल्यू को तुम इंडेक्स को सेट करके रखो. दिस वेरिएबल ट्रैक्स वेयर द नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड इन द अरे. ठीक है, हमको जीरो को एक एक करके साइड में लेना है, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स एक एक करके लेफ्ट में उनको स्वैप करते करते लाना है ना. तो इंडेक्स जो वैल्यू है कि अगर हमको जीरो मिलता रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे, राइट जाते रहेंगे. लेकिन जहां पे हमको एक नॉन जीरो नंबर मिल गया उसको लेके यहां पे रखेंगे, जहां पे इंडेक्स पॉइंट कर रहा है वहां पे रखेंगे, फिर इंडेक्स को एक आगे बढ़ाएंगे. समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो गया, पहला एलिमेंट जीरो है, तो क्या करना है, हमने इंडेक्स को यहाँ पे जीरो पे सेट करके रखा था. और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वन को देखेंगे कि ये तो नॉन जीरो है, तो ये वन कहाँ जाएगा, जहां पे कि इंडेक्स पॉइंट कर रहा है ना, तो वहां पे लेके उसको रख देंगे. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, अभी वन और यहाँ पे भी वन आ गया और इंडेक्स को हमने आगे बढ़ा दिया. फिर हमने इसके साथ कंपेयर किया, यहाँ पे जीरो है, हमको कुछ नहीं करना. लेकिन जब थ्री आएगा तो क्या करेंगे, थ्री को उधर कॉपी करेंगे. क्यों? क्योंकि इंडेक्स का डेफिनेशन ही वही है कि जब तक हमको जीरो मिलता रहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे. किसको, आई को. यहाँ पे इंडेक्स भी है, आई भी है. आई हमारा लूप वाला आई है जो कि एक एक करके प्रोब कर करके देख रहा है कि तुम जीरो हो कि नॉन जीरो. अगर तुम जीरो हो हम तुम इग्नोर करके आगे जाएंगे, लेकिन वो नॉन जीरो हो तो तुमको लेके इंडेक्स जो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वहां पे लेके तुमको रखेंगे और इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, समझ रहे हो तुम? अब देखो इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे थ्री था, तो ये यहाँ पे जब 12 आ गया तो हमने 12 को यहाँ पे रख दिया. ठीक है, ये अभी ऐसे हो गया. ठीक है, तो इंडेक्स को हमने आगे बढ़ाया. हमको क्या करना है, इंडेक्स से लेके एंड तक सबको जीरो सेट कर देना. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है ये पहले कॉपी करके हमने ले लिया लेफ्ट साइड, तो हमारे पास दो जीरोस थे और इंडेक्स अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और हम अरे के एंड तक पहुंच गए. ठीक है, अरे के एंड तक पहुंच गए, तो क्या करना है, इंडेक्स से लेके यहां तक हमको जीरो सेट कर देना है. करने से क्या होगा, ये अरे अभी हमको ऐसे दिखेगा. तो सारे जीरोस एक साइड हो गए कि नहीं? कुछ समझ में आया? हाँ सर. अच्छा, तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है मुझे वो. हाँ, तो ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा. आप लोग जाओ और इसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद हम आगे जो आ रहे हैं वो सब दिग्गज महाराज प्रॉब्लम्स हैं, तो धीरे धीरे करके करते हैं. इट्स ओके, पहले क्लास से ही मैं डरा दूंगा तो फिर तुम ये डीएसए छोड़ दोगे, फिर पता नहीं फिर इसको नहीं पकड़ोगे. ये नहीं होना चाहिए, फिर पाप लगेगा मुझे. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे ये कोड में क्या हो रहा है देख लो. हमने इंडेक्स को जीरो पे सेट किया. ठीक है, फिर एक लूप हमने चलाया जीरो से लेके साइज -1 तक. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी हमारा जो नंबर है तो वो जीरो नहीं है तो हमने उसको कहां पे कॉपी किया, इंडेक्स जहां पे है वहां पे उस वैल्यू को कॉपी करो, इंडेक्स को आगे बढ़ाओ. ठीक है, बस वही करना है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें. आई को जीरो से लेके एंड तक एक एक करके बढ़ाओ. अगर कहीं पे तुमको एक नॉन जीरो नंबर मिलता है तो उसको इंडेक्स पे लेके आओ, इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, फिर आई को आगे बढ़ाओ. देखो अच्छा जीरो है, चलो ठीक है, आगे आगे. नॉन जीरो है, आ जाओ, इंडेक्स फिर आगे, फिर आगे देखो नॉन जीरो है, फिर आ जाओ, फिर आगे. ऐसे करते करते जाओगे तो जहां पे तुम्हारा इंडेक्स रुक गया और तुम साइज तक पहुंच गए, उसके बाद तुमको और एक लूप चलाना है इंडेक्स से लेके साइज तक और सारे वैल्यूज को जीरो सेट कर देना है. क्योंकि सारे जो पॉजिटिव वैल्यूज नॉन जीरो वैल्यूज थे वो तो बाएं तरफ आ गए, तो जहां पे इंडेक्स रुक गया वहां से लेके एंड तक तुमको जीरो सेट कर देना है. तो सारे जीरोस में राइट में आ जाएंगे. ठीक है, चलो अभी मैंने बहुत बात कर लिया. अभी तुम लोग जाके इतने यहां तक जो ब्लॉग में है इसको तुम प्रैक्टिस करना है. तुम्हें ये कोड को लेना है या फिर खुद लिखो, नहीं तो उसको कॉपी करके पेस्ट करो और इनके साथ जस्ट प्ले अराउंड विद दिस कोड. ठीक है, जब जब तक कि तुम्हारा मन नहीं भर जाता, ठीक है, तभी तुम सीखो. अभी ऐसे कोड पढ़ के मेरे बातों को सुन के कुछ नहीं होने. बस मैं ही सीख रहा हूँ, तुम लोग भी सीख रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा वो और भी बेटर सीखेगा. ठीक है, हमें मेकिंग सेंस. तो कल बैठेंगे 12 नंबर से लेके 20 नंबर तक बाकी के प्रॉब्लम्स को सीखने की कोशिश करेंगे. ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये इंटरव्यूज में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। तो हमको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसमें से सारे टेक्निक्स को सीखना है, ठीक है। और सबसे बेसिक है जो 2 पॉइंटर टेक्निक, एक पॉइंटर को इधर रखो, एक पॉइंटर को उधर रखो और वो दोनों को पास लेते आओ। नहीं तो एक पॉइंटर को इधर रखो और एक पॉइंटर को आगे देखो और उसको प्रोब करते रहो, ठीक है। और कुछ भी अगर हुआ तो उसको लेके यहाँ पे स्टोर करो, फिर इसको आगे बढ़ो। दोनों पॉइंटर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये बाएं वाला रुका हुआ है, जो राइट वाला है वो प्रोब करके चेक कर करके जा रहा है। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो फिर इस वाले को बोलता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। तो ये 2 पॉइंटर है। एक में तो दोनों पॉइंटर पास आ रहे हैं, लेफ्ट वाला राइट जा रहा है, राइट वाला लेफ्ट आ रहा है। और एक में क्या हुआ है, 2 पॉइंटर है, बाएं वाला थोड़ा धीरे बढ़ रहा है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही आगे बढ़ता है। राइट वाला क्या है, वो आई के साथ बढ़ता रहता है। चेक करते हैं। कम से कम ये दोनों टेक्निक्स हम इस क्लास में हमने सीखा है कि नहीं? ठीक है। अभी हम इस क्लास को यहाँ पे बंद करते हैं। 1 घंटा लगभग हो गया। तुम लोग जहाँ आईपीएल देखो, माइंड थोड़ा फ्री करो, पानी वानी पी के सो जाओ, सुबह उठ के इसको रिव्यू कर लेना। इसको रिव्यू करोगे तो आगे के प्रॉब्लम्स में और अच्छे से तुमको समझा पाओ। फिर उसके बाद अगले क्लास हम लिंक्ड लिस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय। Okay, sir. ओके।